all dignitaries who have gathered here for this workshop for conservation and wise use of wetlands. I also join with Dr. Ramesh in welcoming you all for this university, for this wonderful workshop initiated. This university has some uniqueness. When all the universities in the country, when they started engineering in different conventional branches, one of the visionary Vice Chancellor, Dr. Anandakrishnan, during 1990s, he initiated a lot of centers, Center for Water Resources, Center for Environment, Institute for Remote Sensing, Institute for Energy Studies, Center for Climate Change and Adaptation. All these centers, they are doing excellently well compared to other institutes in this country. So as far as recently, one of the publications, the SDG goals, Sustainable Development Goals, India, this Anna University ranked 7th position in the world because of all these centers initiated during the 1990s. Really, these centers are doing extremely well in research and also in the consultancy activities in these fields. And I am also energy engineer, started my career in the field of energy engineering in 1990 in this university only. So initially when I started doing work in this energy, I found for the life comfort, we need energy. But when we need energy for our life comfort, it is possible at the cost of making disaster to the environment. So life comfort, we need energy, and environment, we create a disorder in the environment. As we all know, in the last 2 centuries, the carbon dioxide level in this atmosphere changed from 165 ppm to 380 ppm. And in the last 20 years, when large population of this world started using energy in a large way, this 365 became 415 in the last 20 years. That means on an average, every year now 2.5 to 3 ppm increase of carbon dioxide level happening in this atmosphere. This is a great disaster. Also, we are all aware that when this CO2 level touches 600 ppm, human being cannot live in this planet. So all these measures, the sustainable development goals by this whole world is to safeguard this environment. To safeguard this environment, all this. So this ministry is playing a major role on climate change, environmental protection, all this, it's a need of the hour. Unless it is not only need of the hour, unless we do it, there is a great disaster is going to happen in the near future. And in addition, this 97% of the fishermen living in this world are living in the developing nation. So mostly these populations, life also should be taken care. When we take India's the major problem, we have lot of resources, everything. The major problem is the wealth mismatch between 1% of the population and 97% of the population. So that has to be taken care mostly for the agricultural farmers and also the fishermen who are living in this coastal area. So all this has to be taken care when we talk about the sustainable development goals. And now recently our Prime Minister Modi ji also recalled about this, we heard of white and green revolution, but we need a blue revolution and harness the potential in fishermen sector, that is fisheries sector. So there are a lot of potential available in the coastal zone, not only fishermen's things, even in my field, energy, this windmills in the offshore, and also tourism we can develop in a large way. And there are so many opportunities under the earth, also a lot of minerals. Now with this technologies integration, we are also trying our best to bring multidisciplinary activities in all fields. So this field also requires
not only multidisciplinary fields like mining, drones, and environment, climate change, energy, and all mechanical. Along with this, recently, this emerging technologies integration only will make a great change in all fields. So I think this is a very good workshop to put a pathway for this conservation and wise use of wetlands. I request how to integrate these emerging technologies in all these sectors. That is only the way to bring lot of economy to this nation. So the whole world, a lot of chaos is going, it's happening through climate change and all these world wars and all. At this juncture, this Bharat has a major role to, definitely a significant role to bring the new world order. Towards this, everybody should work, and I request all these who are working in this coastal zone need to bring lot of changes through technologies, integration, and multidisciplinary research activities to bring great laurels to this nation. I once again thank all the dignitaries who have come from various parts of this country for this very useful and very need of the hour to make great change in this nation. I thank the organizers and appreciate all the scientists who have initiated this workshop in a great way. Thank you once again for the opportunity. Thank you, sir. I kindly invite Srimati Manju Pandey, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to present the roundtable session results. Dignitaries on the dais and all participants present here. I would like to inform that we had this workshop with a very specific purpose, and we called the workshop Sahbhagita. The purpose of this workshop was, till now, we have been following the regulatory kind of governance for wetland conservation. So the purpose of the workshop was moving from regulatory to a participatory kind of governance. And for that, we have participation from 70 proposed 70 Ramsar as well as proposed Ramsar site. We have those managers here present today. We have participation from state wetland authorities of 25 states. We have participation from knowledge partners, NGOs, civil society activists, and we have corporates present here today. And to top it, last but not the least, we have people who are wetland mitra and who have been at the grassroots level championing the cause of conservation of wetlands. So, sir, the manner in which we've had the workshop was we had 3 roundtables, and in each roundtable we had participants from all these sectors. Like each roundtable had the voice of corporates, wetland mitra, managers, knowledge partners, and civil society organizations. The 3 topics given to them was, the first one was building convergence with conservation and development plan programs and investment at various levels, how to build convergence with the various programs of Government of India. The second roundtable discussed on creating participatory governance mechanisms. And the third roundtable was how to bridge the science and policy action divide. So all the 3 roundtables were chaired by expert members of our National Wetland Committee, and then they had discussions, and they have an hour before that they have in detail come out with recommendations which we will take back with us, sir, and try and devise making a policy out of it. So what I would request is, if in brief the chairpersons of the 3 roundtables could inform the results of the discussions to the minister. I would request roundtable 1, building convergence. The chairperson, Professor Ramachandran, you could speak from there. Give a mic. First roundtable focused on building convergence with conservation and developmental plan programs and investment at various levels. See, when we talk about building convergence, we need to strengthen the institutional mechanism. That can happen at a decentralized level. That's what Mahatma Gandhi ji talked about, Surajya.
So then we can have the natural resources management efficiently. So that is where at a district level, we need to have the wetland committees, and they need to come up with a wise use of wetland, the plans for that, integrating all the stakeholders. Then we need to develop and enforce the SOPs, standard operation procedure for wetland conservation and management. Then we need to have the kind of mechanism to encourage people to take part in the wetland conservation. We need to have a mechanism for carbon credit and also the wetland health card. In fact, Government of India has come up with the soil health card, which is very useful to the farmers. Similarly, on the lines of that, if you have the wetland health card, it will help in managing the wetland and maintaining the health of the wetland. When you maintain the health of the wetland, the people will have water, and people will also have the services from the wetland, which is in the form of provision of the fish, the timber, etc. We have done the valuation of the wetland. For example, Agnashni estuary, which we are trying to make it a Ramsar wetland, which is a candidate for Ramsar wetland, has the goods and services worth 1 million rupees per hectare per year. Or if you take into account all the regulating and conserving services, this comes to about 5 billion rupees per year. So that is the worth of the wetland. Or if you look at the wetlands in Bangalore, a good wetland gives the goods in the form of fish, fodder, etc. towards to about 10,000 rupees per hectare per day. When we pollute it, it comes to 20 rupees per hectare per day. And essentially the people who are dependent on the wetland are the ones get affected. People who depend on wetland are the below poverty level people like fishermen, washerwomen, etc. Even if you look at the Aganashni estuary, you know, when I say 10 lakh rupees per hectare per year, 7,000 families get their job and also the food without any investment in the nature by the government. So that's where we need to make the natural capital accounting in the country. We need to do it in a bigger way, because the Prime Minister has a vision of $5 trillion economy. If we have to reach that, I think we need to account the services provided by the ecosystem in that. So that is where we need to have that ecological services accounting that has to be done. Then we need to communicate and involving all the stakeholders, essentially the industry partners, so that, you know, we can have those conservation, CSR funds and other activities. They can become active partners in the managing the wetland. And when we do that, they'll also understand the importance of the wetland, and also they help in conservation so that our wetland will not get polluted because of the release of the you know, untreated the effluent into the wetland. Then civil society. I come from Bangalore and Western Ghats. So the civil society in Bangalore is quite active. You know, we need to do the capacity building. That is where when they interact with an institution like IISCs and other groups in Bangalore, they also get the knowledge. That's where today they have gone to the NGT and getting the Belandur and wetland, the Vartur wetland rejuvenated because of that. Then the fourth one is we need to invest in future. That is, we need to bring the capacity. We need to have a capacity building and sensitize the youth of the country. That is where we need to have the schools and college students take part in the wetland inventorying and management. When we do that, they become the tomorrow the successful manager, so that we'll have an asset which ensures the food and water for the next generation. These are broadly the recommendation of that the roundtable one. Thank you very much. May I request Madam Surbhi Mehrotra from Group 2, which discussed on creating participatory governance mechanism. Hello. Yeah, Group 2 looked into a mechanism for having a participatory governance arrangement. And from our discussions, we have come out that for having a cross-sectoral and participatory governance, it is very important that we empower our communities and managers as well as corporates, the industry, to be an active partners in the management. So we need to look into a mechanism of how to empower the communities. Because there are, as per the discussions, we come out that there are a lot of need of clarity, the roles and the roles that has to be played in the conservation process or management process. Secondly, as we all know that every wetland is unique, have a very different characteristic,
have a very different ecological services that it offers, be it economic or cultural or provisioning. There has to be a location specific action plans, and that too has to be very specifically designed such that we have to define what are the immediate priorities and what are the long-term priorities. And when we are involving corporates and communities, they should know what is the time frame in which they have to act upon. So having a timelines is very important. Thirdly, we already have health cards for each wetland. What is needed to be done is now to update them. So we need scientific studies as well as a lot of community involvement to update this health card. And the need is to understand what is that frequency of updating these health cards. So whether it should be seasonal or yearly, what is that appropriate time frame in which it has to be updated. Then lastly, I would say there are a lot of success stories that we heard in our session. So we have to bring those success stories to public domain. We have to publish them. We have to make best practices so that other managers can implement them to get motivated and have a best practices manual. So I would request that we should have something in which we can have a regular meeting, seminars and workshops so that we can get to know about those success stories of wetland management. That's all. Thank you. Thank you, madam. Now, Professor Rajiv Sinha from the third group, which discussed on bridging the science and policy action divide. Thank you. Good afternoon, everyone, and the dignitaries on the rise. So this group basically discussed how the science and technology and the modern tools which we have at our disposal can be brought to use in terms of the wetland management and building sustainable strategies for that. So we examined a couple of questions. The first question was, for example, how do we bring that robust knowledge to the ground level? And for example, we all know and we understand that wetlands are not isolated water bodies. They are a part of a larger landscape, and therefore, if you want to restore a particular wetland, आपको उसके आपस के कनेक्शन समझने पड़ेंगे. वो लैंडस्केप में कहाँ लोकेटेड है, उसकी क्या कनेक्शंस हैं, क्या पाथवेज हैं, कैसे वहाँ पे सेडिमेंट आता है, कैसे न्यूट्रिएंट आता है और कैसे वाटर आता है, इन सारी चीज़ों को हमको एक साथ लेके चलना पड़ेगा. That's one. The second point is कि उस connections को समझने के लिए हमारे पास आज की तारीख में बहुत सारे tools हैं. There are lots and lots of technologies which are available now, right from satellite-based technologies to drone-based technologies to sensors. तो इन सारी technologies को हम कैसे integrate करें और उनसे कैसे data हम generate करें, and not just in a scientific studies have to be done, but then हम जो complicated or sophisticated models develop करते हैं, how do we translate those models into information which can be used by the management authorities? That is the challenge which we have as scientists, and that is the challenge we have as a community as well. So that was the second question which we examined, and we came up with a lot of recommendations in terms of building, for example, a very strong inventory of the wetlands with the GIS capabilities. आज की तारीख में आपको यहाँ से एयरपोर्ट जाना है, आप गूगल मैप में लगाते हैं और आपको डायरेक्शन मिल जाते हैं. Why can't we have a similar system, कि आप गूगल में एक वेटलैंड को क्लिक करें और आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए, उसकी स्टेटस क्या है, उसको हम डायनेमिक भी बना सकते हैं. And we actually did a project for Hyderabad, and where we actually made the entire database of all the lakes of Hyderabad as a dynamic atlas. So actually it can now feed. The data can be collected from the satellite data sources, and the map can be updated in terms of what is the status of the wetland today. And that becomes very critical, particularly when you are implementing a rejuvenation plan. You can actually monitor that, how that implementation plan is actually working. That was the second question. The तीसरा question जो हमने examine किया कि is the wetland management only the responsibility of the government or authorities? How can the local people get involved in that? उसके लिए हमें लोगों के मन में wetland के प्रति जो आस्था है वो जगानी पड़ेगी.
उसके लिए एक बिहेवियरल चेंज की ज़रूरत है। तो किसी भी सरकार के बस में नहीं है कि वो हज़ारों लाखों वेटलैंड जो स्प्रेड आउट है हमारी कंट्री में, forget about the 75 Ramsar site we are talking about. It is impossible to manage all of these by the government agencies. And that can only happen when each and every individual, each and every dweller around wetland considers and thinks that wetlands are as equal, as important for him as it is to the government. तो उस behavioral change को लाने के लिए हमें communication बढ़ाना पड़ेगा, हमें उन लोगों को educate करना पड़ेगा, awareness जगानी पड़ेगी कि it is not just a source of water, it is also supporting an ecology, it is supporting a system, it is supporting a livelihood. और अगर उस livelihood को हमें exploit करना है तो हमें ये भी बताना पड़ेगा कि what is the sustainable use of that livelihood, हम कितना उससे निकाल सकते हैं और कितना हमें उनको वापस देना है. So all of these considerations have to be taken into account. And इसके लिए हम, as I said before, we have a huge data set, huge technologies available. How can we make that database, how can we make that technology available to the managers, to the local government, local authority? That has to be thought about. And for that, we need a very, very extensive and a multi-level training and capacity building program. The training and training is not just required for professional, it is also required for managers, it is also required to the local people who are living there. Everybody has to be educated about why and how the wetlands are actually important. So we need to think about these lines and, see, the science it happens at a different scale, but science has to be communicated at the same time to all the different levels, and then only we can make a sustainable management plan for any natural system, be it wetlands, be it rivers, be it coastal management, anything we talk about. So that's where I would like to end. We will have, I'm sure we'll have many such discussions in the future, and we can develop a much, much more sustainable plan for the wetland management in future. Thank you so much for your attention. Thank you, sir. We have taken down all these recommendations, detailed recommendations, and we will soon be coming out with a detailed policy for it. Any other person in the group who would like to speak? You want to? First of all, thank you very much for this opportunity, and I'll take this moment to greet a warm welcome to all the dignitaries on the panel and the respective invitees. Could you introduce yourself? Yeah, so my name is Saurabh Nevalkar. I am a representative from the Maharashtra State Wetland Authority. I just want to touch upon two suggestions and one success story. So my first suggestion is about the question was how we can how the private sector can be contribute to wetland conservation. So my suggestion here was, can we create a mechanism and a green carbon credit mechanism under which any of the company which are climate conscious can adopt a wetland wherein they can invest or directly manage a wetland. In return of that, the company will receive carbon credits according to how much carbon sequestration wetland can cause in a year. For example, अगर मेरा कंपनी 100 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक साल में बनाता है, सीक्रेट करता है, और मैंने एक वेटलैंड को अडॉप्ट किया है जिसके लिए मैं फाइनेंशियल हेल्प करता हूँ, मतलब मैं फाइनेंस देता हूँ और मैनेजमेंट होती है, या फिर मैं डायरेक्टली खुद मैनेज करता हूँ, और वो वेटलैंड की कैपेसिटी है कि 150 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर सिक्वेस्टर कर सके. तो वो जो 100 के छोड़ के 50 जो एक्स्ट्रा मैं सिक्वेस्टर कर रहा हूँ, जो मैनेज कर रहा हूँ, उसके मुझे कार्बन क्रेडिट्स मिलेंगे. सो दिस मैकेनिज्म कैन बी लुक्ड इनटू in the future. My second suggestion was to the question how we can converge all the departments to work on wetlands. So here what we can do, we can integrate wetland conservation and management into the SAPCG, that is State Action Plan on Climate Change, wherein all the department or all the stakeholders, यहाँ पर सबको मतलब अगर मैं एक नोडल एजेंसी हूँ तो मैं अगर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जाऊँगा तो मैं उनको कंजर्वेशन की वेटलैंड कंजर्वेशन उनके दिमाग में इनकलकेट करूँगा, उनको समझाऊँगा, तो वो अपने ये सब सजेशंस
अपने प्रायोरिटीज़ उनको उनके प्रायोरिटीज़ और इसमें वो लोग उसमें कन्वर्ज कर सकते हैं वो. So that is one opportunity for inter-departmental and inter-sectoral conversation and incorporation. And the last one is the success story. Success story is about a flagship campaign taken by the government of Maharashtra, that is Maji Vasundhara, which loosely translates to My Earth. इस कैंपेन के अंदर हमने क्या किया है कि एक इंक्लूसिव और पार्टिसिपेटरी अप्रोच रखा है. इसमें क्या होता है कि 5 इन थीमेटिक एरियाज है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और भूमि. तो इसमें हमने क्या किया है कि जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस है उनको हम लोगों ने एक इम्पिटस दिया है. इन 5 थीमेटिक एरियाज में हमने बहुत सारे इंडिकेटर्स दिए हैं और उनके नीचे वो काम करते हैं. मैं कुछ एग्जांपल दूंगा. फर्स्ट ईयर माजी वसुंधरा के अर्बन एंड राइट ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज टू राइट टू द ग्राम पंचायत 696 लोकल बॉडीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, जिनमें से तो उसका हम लोग का रिजल्ट क्या हुआ. एक साल के बाद 21 लाख ट्रीज वर प्लांटेड. Along with that, 775 water bodies, not just wetlands, all water bodies were conserved, rejuvenated and taken care of. Other than that, 70,000 solar lights install किए गए. उसके बाद 1 लाख LED लाइट्स इंस्टॉल किए गए. ये सिर्फ पिछले साल की बात है. इस साल 12,000 लोकल बॉडीज़ ने पार्टिसिपेट किया है. हम इनको कोई फंडिंग नहीं देते. हमने क्या किया है कि हमने उनको पूछा है कि जो एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट के स्कीम्स हैं उनका आप उपयोग करें. जैसे कि उजाला स्कीम है, जैसे कि कृषि सिंचाई योजना है. हमने उनको ये दिया है कि आप इसका यूज़ करके ये सब काम करें. और यस, दैट्स इट. थैंक यू. थैंक यू. इस सहभागिता के काम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है ग्रास रूट में जो वेटलैंड मित्र काम करते हैं, क्योंकि ग्रास रूट पे क्या हो रहा है उन्हें पता होता है और वो आके उसे आगे लोगों को बताते हैं. तो आज हमारे साथ काम तो वैसे देश में बहुत सारे लोग कर रहे हैं ग्रास रूट पे, जो लोग भी वेटलैंड के आसपास रहते हैं, पर सभी को यहाँ बुलाना मुश्किल है. तो हमने 12 लोग अक्रॉस द कंट्री से बुलाए हैं जिन्हें हम वेटलैंड चैम्पियंस का नाम दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए कुछ मेहनत करी है. तो आज मैं बुलाना चाहूँगी अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने के लिए मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से आई गंगा और बबीता राजपूत जी को. गंगा जी ने अपने गांव की महिलाओं को रास्ता दिखाया. गांव का वेटलैंड कंजर्व करने के लिए कुछ सुपरस्टिशन था जिसमें लोग काम नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने सारी महिलाओं को जोड़ा, उन्हें जल सहेलियों का नाम दिया और इन सब ने मिलकर अपना वेटलैंड रिवाइव किया, जिसकी वजह से गांव में न सिर्फ अब पानी की कमी नहीं है, बल्कि महिलाओं को दूर दूर तक पानी लेने जो जाना पड़ता था उससे भी उनको छुट्टी मिली है. तो गंगा जी, आप उधर से बोलना, जहाँ आपको ठीक लगे. मेरा नाम गंगा राजपूत, मध्य प्रदेश जिला छतरपुर परमात्म समाज सेवी संस्था से जल सहेली के रूप में काम करती हूँ. हमारे गांव छतरपुर जिला में एक चौधरी खेरा गांव है, जिसमें जनवरी या फरवरी में पानी का संकट इतना आ जाता कि पानी पीने को बहुत परेशान होते थे. एक गांव में हमारे गांव में एक फूटा तालाब डरा हुआ था. परमा समाज सेवी संस्था से जुड़ के एक महिला ने एक संगठन बनाया. तो एक तालाब बहुत पुराना, जब से हमारी शादी हुई थी हमें पता नहीं है, जैसे बहुत पुराना, जब पता उसमें पानी पूरा डा था, जैसे उसको सरकार भी नहीं सहयोग कर सकती. उन्हें गांव वाले को उसको छिगाती जैसे जा ही नहीं सकती, जो को करेगा उसको मरना पड़ेगा, उसमें डर ऐसा था. तो जब महिलाओं को संगठन बना कि पानी है सो मरने और नहीं है सो मरने, कैसे मरने बिना ही पानी के मारा, तो संगठन की महिलाओं ने
वो तालाब में काम किया, तालाब में काम किया तो वो तालाब बांधने के बाद में जनवरी में पानी सब समाप्त हो जाता था। अब जितने भी जल स्रोत हैं उसमें पानी पर्याप्त 2019 में काम कर किया था और आज 3-4 साल हो गई पानी का भी नहीं छोड़ता है, जैसे पीने का संकट नहीं आता है। ऐसे अंधविश्वास को महिलाओं ने परमार्थ से जोड़ के ऐसे संगठन ने अंधविश्वास का दूर किया। और अभी भी जैसे गाँव में संगठन जे चलते हैं, सब जने जुड़ती हैं, संगठन बनाती हैं कि पानी को संगठन बनाते हैं तो पानी कर सकती हैं महिलाएं। एक नदी है वो सूखी पड़ी हुई है तो उसमें भी नदी घाटी का संगठन जुड़ा हुआ है कि उस नदी को जीवित करना में संगठन चलते हैं, सब जने जुड़े हैं। थैंक यू गंगा जी, बबीता जी और आपके गांव की सभी जल सहेलियों को। अब मैं बुलाना चाहूँगी सिक्किम से आए श्री सांगे लामा शेरपा को, जो भी सिक्किम गए हैं और गैंगटॉक गए हैं, सभी लोगों ने छांगू लेक, जिसको सोमगो लेक भी बोलते हैं, वो टूरिस्ट सर्किट का एक मेजर पार्ट हो गया है और उससे काफ़ी लोगों को लाइवलीहुड भी मिल रहा है। बट ओवर टूरिज़्म से लेक की खराबी भी हो रही है। तो सांगे शेरपा जी जो हैं वो सोमगो पोखरी संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं और वहाँ काम कर रहे हैं। इनका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में भी इनके बारे में बताया था। शेरपा जी। Good evening, honorable ministers and all the officers from Forest Department. मेरा नाम सांगे शेरपा है और मैं ऑफिस सेक्रेटरी छांगू पोखरी संरक्षण समिति का हूँ। सिक्किम में बहुत सारे वेटलैंड्स हैं और छांगू लेक एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है जो कि ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ का अल्टीट्यूड 12,400 फीट है, जहाँ पे 6 महीने बर्फ़ गिरता है और 6 महीने बारिश होते हैं। और इस जगह में आजकल 5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट विजिट करते हैं। पहले इस लेक का कोई टूरिज़्म, लेक में बहुत टूरिज़्म आता था और लेक के पास में छोटा छोटा स्टॉल्स लगाए हुए थे जो कि वहाँ के लोगों का लाइवलीहुड चलता है वहाँ से। तो 2007 तक जो स्टॉल्स था वो स्टॉल्स छांगू लेक के पास में था और वहाँ पे कोई वेस्ट का देखभाल नहीं करता था और कोई मैनेजमेंट नहीं था लेक का। तो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने 2006 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके अंतर्गत पोखरी संरक्षण समिति, लेक कंजर्वेशन कमेटी का गठन करना बहुत ज़रूरी है, इस वेटलैंड को प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है करके एक नोटिफिकेशन तैयार किया। उसी के बलबूते में एक छांगू पोखरी संरक्षण समिति का गठन हुआ जो कि 2008 में गठन हुआ। उससे वो फॉर्मेशन का बाद में हमारे लोकल पंचायत और हमारे जो जितने भी गांव के जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए सोचते थे, उन लोगों ने वो जो स्टॉल लगाए हुए थे उसको शिफ्ट करने का निर्णय लिया और गवर्नमेंट के साथ मिलके वो जो जितने भी स्टॉल्स थे वो लेक के पास से दूसरे जगह में शिफ्ट कर दिया जो कि लेक के थोड़ा नीचे में है। और वहाँ पर जाने के बाद में लेक में इतनी गंदगी फैला हुआ था कि हमारे गांव के लोग और हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स थे, हम सब लोग आके उधर पे मिल के वहाँ पे कचरा इतना 12 ट्रक 15 ट्रक जो कि टूरिस्ट आते थे, खाते थे, बाहर में फेंक देते थे, कोई अवेयरनेस नहीं था। उस टाइम से हम लोगों ने काम किया और जितना भी अभी आज प्रेजेंट सिचुएशन में है, लेक का इकोसिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है अभी। और हमारा समिति गठन करने के बाद में हम लोग टूरिस्ट को भी सेंसिटाइज करते हैं, स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं, लोकल्स को, और हमारे जो लेक के पास में जो आर्मी जो स्टेशन है उन लोगों के साथ मिलके भी हम
वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करते हैं और इन्वायरमेंटल और वेटलैंड कंजर्वेशन के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस जनरेट करते हैं और इस तरह से हम लोग वेटलैंड को कंजर्वेशन करते हैं। साथ साथ में हमारे इलाके में इतना ज़्यादा टूरिस्ट आता है कि 2000 से 2500 तक गाड़ी फ्लो होता है, जो जिस गाड़ी में जो गाड़ी टूरिस्ट से भरा होता है। और इतना कोई टूरिस्ट तो इतना अनएजुकेटेड होता है कि वो जहीं कहीं भी वेस्ट को फेंक देता है गाड़ी के बाहर में, इतनी गंदगी बजा देता है। तो इसी दौरान हम लोगों ने एक प्लान किया और हम लोगों का एक एनुअल लेक कंजर्वेशन प्लान बनता है साल में। उसके अंतर्गत में हमने जितने भी टूरिस्ट व्हीकल है उसमें गार्बेज बैग का प्रोविज़न बना के हर एक टूरिस्ट गाड़ी जितना भी आता है उस गाड़ी में टूरिस्ट बैग प्रोवाइड किया है। और उसमें लिखा भी होता है कि आपका जो कचरा है बाहर मत फेंक देना, उसको अंदर में ही जो गार्बेज बैग प्रोवाइड किया है उसी में डालना है। तो इस तरह से हम लोग वहाँ पे काम करते हैं। अभी आप लोग कितना ऑफिसर्स लोग, कितना आदमी लोग तो छंगू विजिट किया होगा, शायद आप लोगों ने देखा होगा। जो 1990 और 2000 के बीच में जो छंगू लेक था उसमें बहुत गंदगी थी, जहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं था। अभी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हम लोग मिलके बहुत सी कंजर्वेशन का काम कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी काम कर रहे हैं। और आज हम इधर में प्रेजेंट हुए, MOEF एंड CC को बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि हम लोग ग्राउंड लेवल का ग्रास रूट लेवल में जो काम कर रहे हैं इनको इंकरेजमेंट देने के लिए आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम दिया, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू शेरपा जी, आप लोगों की मेहनत से आज हमारे वेटलैंड्स बचे हुए हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी श्री रामवीर तंवर जी को, जो गौतम बुद्ध नगर यूपी से आए हैं। श्री तंवर प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और इन्होंने अब तक करीब 40 से 50 पॉन्ड्स रिवाइव किए हैं। इनसे बातचीत करने में पता चला मैम कि ये पहले तो वेटलैंड्स को ज़्यादातर सफाई में ध्यान देते थे, फिर इन्होंने ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मंत्रालय का, उसमें इन्होंने एक कोर्स किया जो CPCB ने करवाया था, जिसमें इन्होंने टेक्निकलिटीज सीखी, BOD COD और वाटर को कैसे देखा जाता है, कैसे साफ़ किया जाता है। उसके बाद इन्होंने अपना ध्यान प्रॉपर पॉन्ड रिजुविनेशन में लगाया और प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में इन्हें पॉन्ड मैन का खिताब भी दिया है। तो तंवर जी आप अपने शेयर करेंगे एक्सपीरियंसेस। नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन। नमस्कार सर, मेरा नाम रामवीर तंवर है और मैं उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर ज़िला से हूँ। अपने कॉलेज के दिनों में आसपास के जो तालाब हैं हमारे उधर, चाहे वो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं या वेटलैंड्स है, सबको हम तालाब ही वहाँ पे कहते हैं। तो आसपास के इस तरह की वाटर बॉडीज़ जो पहले सुंदर थी लेकिन बाद में कचरा डाल डाल के पूरा उसको डंपिंग यार्ड बना दिया। तो ऐसों को गार्बेज आसपास से पूरा क्लीन करना शुरू किया था। और उसी दौरान फिर ग्रेजुएशन के बाद अपॉर्चुनिटी मिली कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का एक इनिशिएटिव है GSDP, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें बहुत अच्छी ये चाहे वो वाटर मैनेजमेंट के स्किल्स हों, पैरामीटर्स हों, BOD COD, वेटलैंड्स के बारे में नॉलेज हो, रिवर्स मैनेजमेंट, फ्लूड ये हो, तो उसके सीखने के बाद थोड़ा सा नॉलेज हुआ और फिर पूरी तरह से CSR की हेल्प से, लोगों के डोनेशंस की हेल्प से तो लेक रिवाइव करना, पॉन्ड रिवाइव करना शुरू किया। और एक दो वाटर बॉडी रिवाइव करने के बाद पता चला, एक्सपर्टीज हुई। उसके बाद अभी तक हम ऑल इंडिया में अराउंड 40 वाटर बॉडीज़ को रिवाइव कर चुके हैं और बहुत सारी IITs में, IIMs में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने सीखी अपने फेलियर से, उनको जाके हम उनको सिखाते हैं कि कैसे ग्राउंड पे जाके हम वाटर बॉडीज़ को रिवाइव कर सकते हैं बहुत नेचुरल ढंग से। हमें बहुत ज़्यादा उसके लिए फंड्स भी नहीं चाहिए। और प्राउड टू से दैट कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने मन की बात में 2 बार हमारे कामों का जिक्र किया है और उन्होंने पॉन्ड मैन की उपाधि भी मन की बात के माध्यम से दी और उसी के बाद से पूरा मीडिया और ये इस तरह के नाम से प्रचलित हो गया। तो ये इस तरह के प्रोग्राम से आज बहुत ज़्यादा नॉलेज सीखने को मिली है वेटलैंड्स के बारे में और उम्मीद है कि आगे भी हम मिलकर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने के लिए मेहनत करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी सर मैम जो हमारे पास और 7 वेटलैंड चैम्पियंस आए हैं उनको फेलिसिटेट करने के लिए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी श्री ताम्बोर लिंगडो जो मेघालय से आए हैं। श्री लिंगडो सेक्रेटरी हैं हिमा के जो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है मेघालय में। He has helped and initiated the revival of 70 villages in Mawphlong sub-district of Meghalaya by encouraging planting of trees around them, cleaning water at regular intervals, and also organizing other awareness programs. Shri Lingdo. श्रीमती श्वेता हुले जो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र से आई हैं, ये लीड करती हैं स्वामिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इंडिविजुअल्स का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। इनकी लीडरशिप में स्वामिनी सेल्फ हेल्प ग्रुप ने मैंग्रोव सफारीज ऑर्गेनाइज करी हैं मांडोवी क्रीक सिंधुदुर्ग में टूरिस्ट के लिए। श्रीमती हुले। श्री शेरपा जिन्हें अभी आप लोगों ने सुना जो सिक्किम से आए हैं। He has been involved in the conservation of Somgo Lake since the inception of Pokhri Sanrakshan Samiti. श्री रामवीर तंवर गौतम बुद्ध नगर यूपी से आए हैं जिन्होंने अभी जैसा इन्होंने बताया काफ़ी पॉन्ड्स को रिजुविनेट करने का काम किया है। श्री तंवर। श्री मीरासा जो पुलिकट लेक तमिलनाडु से आए हैं। इन्होंने पिछले 20 साल से ये पुलिकट लेक के अराउंड लेक कंजर्वेशन में लगे हुए हैं और ही इज़ एंगेज्ड इन रिस्टोरिंग मैंग्रोव्स एंड रेजिंग अवेयरनेस अबाउट द इकोसिस्टम, thus making efforts to save the livelihood of the communities around. श्री मनीष राजंकर जो विदर्भ महाराष्ट्र से आए हैं। He is a bird enthusiast turned development worker who along with Ms. Shalu Kole and the fishing community has rejuvenated about 5 dozen wetlands of the Vidarbha region in Maharashtra. They have fallen back on the traditional wisdom and encouraged local participation to safeguard their livelihood. Shri Kochu Mohammed, ये केरला के वेम्बनाड कोल वेटलैंड से जुड़े हुए हैं। पिछले 5 डिकेड्स की लॉन्ग एसोसिएशन है इनकी उस वेटलैंड के साथ एंड ही कोऑर्डिनेट्स विद ओवर 130 क्लस्टर्स ऑफ फार्मर्स फॉर एन एलैबोरेट प्रोसेस ऑफ de-watering, storing and recycling water from the wetlands for paddy cultivation and also maintaining water in the wetland. गंगा राजपूत जी और बबीता राजपूत जी जो बुंदेलखंड से आई हैं, इन्हें आपने अभी सुना। ये अपनी जल सहेलियों के माध्यम से अपने गांव के पॉन्ड्स को रिवाइव कर रही हैं। श्री विजय कुमार काबी जो उड़ीसा से आए हैं। श्री विजय has led the community to convert degraded land in Badkot village in Odisha into a 25-acre mangrove forest. His work has also been appreciated by Honorable PM in Man Ki Baat. श्री आर्टुओ डिसोजा जो गोवा से आए हैं। He's been a key member of Save Bondwall Lake, a people's movement
to protect the century-old wetland in the village of Santa Cruz in Goa. Miss Aditi Diodhar, जो पुणे महाराष्ट्र से आई हैं, she is the founder director of the NGO Jeevit Nadi located in Pune, and over the past 3 years she is leading the volunteers of Jeevit Nadi in cleaning the stretches of Mutha River in Pune. और आखिर में श्री शंकर जो मुथुपेट तमिलनाडु से आए हैं, he is a resident of Muthupet and he has been engaged in the preservation of mangroves of Muthupet. पिछले 20 साल से इन्होंने कम्युनिटी को मोबिलाइज किया है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की मदद से. थैंक यू सर. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. I now request Mr. R. Mukundan, Chair CII Environmental Committee, CEO and MD, Tata Chemicals Limited, to address the gathering. Honorable Union Minister, Ms. Shri Bhupender Yadav ji, Honorable Minister for State, Shri Ashwini Kumar Chaube ji, Srimati Leela Nandan, Secretary, and Srimati Manju Pandey, Joint Secretary, and Professor Velraj and Professor Ramesh. It's indeed a very big delight for us to be here at this event and constantly engage with government. Firstly, I want to thank from CII side that the support MOEFCC has been giving to us in driving environment agenda has been absolutely superlative. One of the key examples of that has been the India Business Biodiversity Initiative, which was conceived by the ministry and CII in 2014. And this is a multi-stakeholder platform which has been created. Currently, about 45 Indian companies are signatories to this, and they represent about 5% of India's GDP. And they're all working towards the overall goal of biological biodiversity and to work towards collaborative action. In 2021, 30 member companies submitted their disclosures on biodiversity voluntarily on the actions taken for biodiversity conservation. And the highlights are that all these members consider these initiatives to be very core to their strategy and to their growth and to the economic growth. So no longer is biodiversity seen as a separate initiative, but it's seen as part of the core movement forward. Many of them are adopted science-based target, and many of them have also put in place no net loss to biodiversity as a core principle with which they will work. And this entire agenda which we have set up is all in line with the Global Biodiversity Framework, which is going to be adopted in the upcoming UN Biodiversity Conference of COP15. So today's workshop is a very important starting point for us to recognize value of wetlands and collaborative action that contributes to conserving biodiversity and addressing climate change risk. And considering the criticality of wetland conservation benefits they provide to society, we are absolutely delighted that CII, IBBI and MOEFCC are signing an MOU under this cooperation, and we will do dedicated work which will be towards wetland protection within the framework which we will jointly develop in partnership with ministry in achieving the goal of conservation and wise use of wetlands by engaging and partnering with individual wetlands and wetland complexes, districts, states, and at national level programs. What we will do certainly will be to develop action plan in 2 months, because this is also a point that it should be very time specific, which came up in the deliberations, and also enlist very specific action and also engage with implementing agencies, organizational role and performance indicator. One key part of this, as you heard, sir, is that awareness creation is very critical. We will work towards awareness creation, not only with the stakeholders, but also within businesses, because as more businesses become aware, they can work with the local community and the government in the specific district area and impact much better. We also want to develop with the government, with MOEFCC, decision-making tools which will help the business to integrate this wetland and wetland valuation within their business strategy. And overall, our approach will be to promote wetland conservation
and wise use within portfolio of action in nature-based solution. And the whole felicitation of the nature, the wetland myth and the celebration and recognizing them today is a very important tool in making sure that business also engages with them on nature-based solution. And overall, this is in sync with the multi-stakeholder partnership development which we want to do. So in the end, I just want to thank you, sir, for your support and collaboration and working, ensuring that Indian business is able to partner for biodiversity conservation and address climate change risks in line with the goals set by the government for betterment of greener and cleaner India. Thank you, sir. Thank you, sir. Now we have the announcement of formal collaboration between Ministry of Environment, Forest and Climate Change and CII. Sir, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the Confederation of Indian Industries jointly established the Indian Business and Biodiversity Initiative to enable Indian business making commitments for biodiversity conservation and sustainable use. The two entities are entering into an agreement for the establishing a joint work program on wetlands. Sir, we request your kind permission to sign the document. May I now request Ms. Seema Arora, Deputy Director General, Confederation of Indian Industries, and Srimati Manju Pandey, Joint Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, to come up to the signature table and sign on the Memorandum of Cooperation. Thank you, ma'am. I now invite Srimati Leena Nandan, Secretary, Environment, Forest and Climate Change, to address the gathering. Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change, Honorable Minister of State, Environment, Forest and Climate Change, Joint Secretary from the Ministry, the VC of Anna University, Dr. Ramesh from the National Council of Sustainable Social Management, ladies and gentlemen. This is indeed a very historic event that has been organized, and the vision that our minister has articulated, where he has been extremely focused on conservation of wetlands, on developing wetlands, on taking them up as Ramsar sites, and of bringing to the mainstream the need to conserve these wetlands as an essential part of our environment that we want to restore and maintain. I think this vision will be taken forward in a very, very big way through this workshop which has been organized today. And I must compliment Manju, who has taken a lot of trouble to do a lot of detailing, which is why we have this excellent participation from the wetland authorities, from the states and UTs, from the private sector, which is represented by Mr. Mukundan and his team, and from the NGOs and civil society, who are bringing forward their passion and their individual and collective efforts. आज हम लोगों ने इतने इंस्पायरिंग स्टोरीज को सुना है. हमारी बहनें जो मध्य प्रदेश से आई हैं, इन्होंने किस प्रकार से एक मानसिकता को बदलाव लाया, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया. सिक्किम से, गौतम बुद्ध नगर से, केरला से, पुलिकाट लेक से, so many of our people all across the country are making tireless efforts, और इन सब के इस मिली जुली सहभागिता से ही हम अपने देश के वेटलैंड्स को कंजर्व भी करेंगे और बढ़ाते भी जाएंगे. और इनका जो मूल्य है हमारे वर्तमान के लिए, हमारे भविष्य के लिए, ये इसको कोई नज़रअंदाज न करे. इसके लिए हमें ऐसे सहभागिता कार्यक्रमों को लगातार ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. As the round table reports brought to the forefront, it is important to share best practices. It is important to see कि किसी wetland का इतिहास क्या है, वो कैसे wetland बना है. It is important to understand कि scientific thought को किस प्रकार से हम policy making में simple तरीके से लाएं, क्योंकि हर चीज़ को जितनी ज़्यादा हम complexity लाएंगे, उतना उसको
implement करना मुश्किल होगा. So how do we bring the commonality between the best scientific research and the monitoring and standards and actually translate them into actionable points on the ground? These are the things which are a challenge before us. And I'm sure कि जिस तरह का पहला कदम आज उठा है, where we have participated, and it was a good thing that we have come to participate in this part of today's workshop because we were able to hear from all of you, जो आप लोगों ने दिन भर की चर्चा की है और इतने अच्छे सुझाव रखे हैं, इसके बारे में हमें सुनने का अवसर मिला. तो इसीलिए ये हमारे लिए ये और भी महत्वपूर्ण है आज का ये कार्यक्रम. As far as the ministry is concerned, हमारा तो एक दायित्व है एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के प्रति जितनी भी पॉलिसी लेवल की सोच है और जितनी भी हम collaboration and cooperation से we can take this thinking down into action on the ground. But what we really want to emphasize at every stage is that it is only through cooperation, collaboration, and coordination and convergence that we will actually be able to make a difference when it comes to the challenge of climate change. So I would like to thank all of you who have spent your time and your energy और ये दिन प्रतिदिन की जो आपकी जो कमिटमेंट है जो आज हमें सुनने को मिला उससे बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन हमें मिलता है. एंड your experiences can then build into the models and the policy framework that we will develop. So I compliment all of you and I assure you that the ministry will make sure that whatever are the recommendations that we have taken up, whatever the private sector thinks can be the right mode for a collaborative approach which has long-lasting and sustained benefit, we will certainly do all that and more. Thank you. Thank you, ma'am. I kindly invite Honorable Minister of State for Environment, Forest and Climate Change, Shri Ashwini Kumar Chaube ji, for his kind words. आज नम भूमि संरक्षण पर जो सहभागिता कार्य वर्कशॉप का जो आयोजन इस कार्यशाला का किया गया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ. भारत सरकार के हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, हमारे संयुक्त सचिव श्रीमती, हमारे विभाग के सचिव यहाँ श्रीमती लीना नंदन जी, संयुक्त सचिव श्रीमती मंजू पांडे जी, अंतर्राष्ट्रीय नम भूमि दक्षिण एशिया के निदेशक डॉक्टर रितेश कुमार और विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे प्रतिनिधिगण, कुलपति यहाँ बैठे हुए श्री जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, प्रोफेसर आर रमेश, डायरेक्टर NCSCM, प्रोफेसर आर वेलराज जी और सभी उपस्थित हमारे नम भूमि के सभी नारायण और नारायणी, मैं आप सबको नमन करता हूँ. मुझे खुशी है कि अभी जितनी प्रेरणादायक बातें हम सब लोगों ने सुना है और सभी ऐसे अनुभवी और सबकी जो सहभागिता इस कार्यक्रम में हुई है, सचमुच में हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है. मैं पहली बार इस प्रकार के वेटलैंड के कार्यक्रम में जुड़ा और देश भर के मैं देख रहा हूँ कि कई कोने कोने से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सभी जगहों से यहाँ हमारे नम भूमि के
नम मित्र और नम सहेलियां यहाँ भाग ले रहे हैं। आज हम सभी जानते हैं कि नम भूमियों के संरक्षण और उसके विवेकपूर्ण उपयोग के संबंध में जो यह आयोजित कार्यशाला है उसमें जो हिस्सा लेने के लिए आए हैं और राउंड टेबल में जो वार्ता हुई और जिसको आपने अंत में तीनों ही लोगों के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया वह भी हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरे विश्व में पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो सतत प्रयास हो रहे हैं, हम इस दिशा में भारत सरकार की जो हमारी भूमिका और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो पहल है, उनकी पहलों की जो अलौकिक प्रशंसा देश और दुनिया भर में हो रही है, ऐसे में हमारी भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जिस कारण से हमें और भी आगे करने की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि अभी पॉन्ड में इनकी चर्चा हो रही थी। मैंने मन की बात में उस दिन देखा था, आज प्रत्यक्ष इनसे मिलने का अवसर हुआ। इन्हें उत्साहवर्धन करने का सरकार की ओर से जो प्रयास हुआ है वह भी सराहनीय है। मुझे लग रहा है कि जितने भी तालाब हम लोग प्राचीन काल से जिन तालाबों को हम लोग भूलते जा रहे थे, उस तालाब के संरक्षण और हमारी जो संस्कृति वह उसका हिस्सा हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो आत्मनिर्भर गांवों का होना हमारी प्राथमिकता है, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार दोहरा रहे हैं, और उन्होंने जो पूरे देश में आज़ादी के 75वें वर्ष पर हर जिले में जो अमृत सरोवर की बनाने का जो निर्णय लिया है, यह उदाहरण अद्वितीय है। देश भर में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस परिस्थिति में नम भूमि संरक्षण का पर कायम हुआ है। वानिकी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के जीर्णोद्धार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट अभी हाल ही में मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय और पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से वो जारी किया है। और सबका एक ही उद्देश्य है कि हरित गृह की ओर अग्रसर होना। हमारा जो उद्देश्य है कि इन नदियों को अविरल धारा स्वच्छ किनारा या अविरल धारा स्वच्छ किनारा, इसको बनाने की सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका है। यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे भारत में विविध प्रकार की जो समृद्ध नवभूमियों से संपन्न यह देश है। हम सभी बचपन से सुनते आ रहे हैं, साथ ही इसके महत्व से भी हम सभी अवगत हैं कि जल ही जीवन है। और निश्चित रूप से नवभूमियों में जो जीवन रक्षक प्रणालियां हैं,
और जिनसे जल चक्र की कार्य प्रणाली सुनिश्चित होती है। भारत की सभ्यता व संस्कृति का विकास इन नदियों के किनारे से ही हुआ है, जिनमें हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई वाली नम भूमियां, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसे विशाल नदियों, हम कहते हैं अयोध्या के बारे में, मथुरा के बारे में हर व्याख्यान आता है, तो हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारी जो नदियां हैं, गंगा, सिंधुश्च, कावेरी, यमुना च सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र पुणात्मा, तो ये सभी नदियां जो उसके बाढ़ के मैदान, तटरेखा पर स्थित लैगून, कच्छ, वनस्पति दलदल भूमि और समुद्री पर्यावरण में प्रवाल भित्ति जो कोरल रीफ है, वो सभी शामिल है। आज जल और खाद्य की बढ़ती सुरक्षा के समय में नम भूमियों की कार्य प्रणाली को कायम रखना अति महत्वपूर्ण है और इसे लेकर हमें संवेदनशील भी होना पड़ेगा। वास्तव में नम भूमियों के अनेक प्रकार के पौधों और जंतुओं के लिए जो जीवन रक्षक है, जैसे जैसे नम भूमियाँ अवक्रमित होती हैं, वैसे वैसे ही उन जीवों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ने लगता है। मानव कल्याण की सुरक्षा के लिए नम भूमियों का संरक्षण और उनका संवर्धन अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नम भूमियाँ मानव कल्याण के लिए कई तरीके से सहयोग करती रही हैं। एशिया की 10 प्रमुख नदियाँ हिमालय की अत्यधिक ऊंचाई वाली नम भूमियों से निकलती हैं, जिनके नदी बेसिन से विश्व की आबादी की 1/3 से अधिक आबादी को जीवन मिलता है। आर्द्र भूमियाँ जो बाढ़ और सूखे के बढ़ते जोखिम के संदर्भ में भी हमें सुरक्षा प्रदान करती है। आर्द्र भूमियाँ स्पंज के रूप से कार्य कर सकती है, अत्यधिक वर्षा का भंडारण भी कर सकती है और खराब मौसम के दौरान धीरे धीरे पानी भी छोड़ सकती है। हमने देखा है किस प्रकार से श्री केदारनाथ जी में जो उन ग्लेशियर के पहाड़ पर उस सरोवर को फूटते हुए और उससे स्वयं हम हजारों लोग उससे प्लावित हुए, मैंने उस दृश्य को भी झेला है। हमने विकास की जो आंधी है उस दौड़ में इन नवभूमियों को समाप्त करना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए शहरी क्षेत्रों का विस्तार ज़्यादातर प्राकृतिक क्षेत्रों और ज़्यादातर आर्द्र भूमि की कीमतों पर हो रहा है, जो दुखद है। कोलकाता में सॉल्ट लेक सिटी नामक दलदल पर उभरी थी, जिसके अवशेष पूर्वी कोलकाता आर्द्र भूमि के रूप में देखे जा सकते हैं। श्रीनगर में नंबलों को बस स्टैंड और शहरी बस्ती बनाने के लिए रखा गया है। दिल्ली में तटबंधों के भीतर नदी को नियंत्रित करके और शहर को अपनी पूर्वी सीमा पर बढ़ने की अनुमति देकर नदी के नम स्थानों को पुनः बहाल किए जा रहे हैं। चेन्नई के बाढ़, सिंक, पल्लीकरनई दलदल की भी यह कहानी उसी तरह की है। ऐसा ही रुझान मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में हाल के दिनों में देखने को मिला है। मुझे लगता है कि ये नम भूमि की हानि और अवक्रमण को रोकने के लिए लोगों को और इस लोगों के बीच और इस नरभूमि जो हमारे नम भूमि के बीच संबंधों को जोड़ने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है और इस बात पर महत्व दिया जाना आवश्यक है कि पारिस्थितिक तंत्रों
का मानव उपयोग संरक्षण के अनुरूप हो। सतत विकास पर जोर देने से निश्चित रूप से उचित उपयोग के लिए ऐसे संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करे कि नम भूमि पर मानव निर्भरता न केवल वर्तमान में बल्कि भविष्य में भी बनी रह सके, इसका ख्याल रखना है। भारत में गरीबी उन्मूलन और संधारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा को प्राप्त करने के लिए संधारणीय विकास एजेंडा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू 2030 में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है यदि खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य में नम भूमि के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दिया जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में नम भूमियों के संरक्षण और संधारणीय प्रबंधन हेतु समावेशी नीतिगत सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। राष्ट्रीय जल नीति के अंतर्गत नदी, गलियारों और बाढ़ के मैदानों का बेसिन पैमाने पर प्रबंधन और संरक्षण करने की जो मांग की गई है, उसमें राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन और हरित भारत मिशन के तहत नम भूमि संबंधी कार्रवाइयाँ भी अभिज्ञात की गई है। नम भूमि संरक्षण और उनके उचित उपयोग के संबंध में सभी प्रयासों में जो गति लाने की अत्यंत आवश्यकता है और वर्तमान में नम भूमि की क्षति और उसका अवक्रमण एक गंभीर विकासात्मक चुनौती है और इसलिए सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और अभिकरणों के बीच संगठित कार्रवाई करने की भी अत्यंत आवश्यकता है। नीतियों को जमीनी स्तर पर चलाने, उच्चतम पद्धतियों के अंगीकरण को अंतर्विनिष्ट करने और नम भूमि प्रबंधकों के क्षमता निर्माण में सिविल सोसाइटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इन संवेदनशील पारी प्रणालियों को संरक्षित बनाने के लिए नम भूमियों के प्रति विशेषकर समुदायों, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, और समाज को समग्र रूप से बदलने पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। अभी जिस प्रकार से बहन गंगा ने, मध्य प्रदेश की बहन है, उन्होंने जिस प्रकार से सारी बातें बताई और जो गंगा सहेली उन्होंने खड़ा किया है, वो सचमुच में अनुकरणीय है। हम सभी समझने की यह आवश्यकता है कि नम भूमि संरक्षण और उसके उचित उपयोग से संधारणीय विकास लक्ष्यों और विकास कार्यक्रम के सभी पहलुओं में योगदान मिलता है। ये सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारकों से मैं आग्रह करता हूँ कि वे नम भूमि को प्राकृतिक संपदा एवं सामाजिक संपत्ति के रूप में प्रमुखता से उसे प्रदान करें तथा संरक्षण और विकास संबंधी कार्यनीतियों को तैयार करते समय नम भूमियों पर उनकी पारी प्रणाली, सेवाओं और जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी है, उनके महत्वों की व्यापकता के साथ विचार करें। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जो हमारे शास्त्रों में उल्लिखित है, समगच्छध्वम समगच्छध्वम समबद्धध्वम सम वो मानासि जानताम, हम सभी मिलजुल करके इस काम को आपस में संवाद करें और हम सब लोग इस लक्ष्य को पाने के लिए जो मुझे लग रहा है कि आपस में जिस प्रकार से आज का यह कार्यक्रम हुआ है सहभागिता का, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु माँ विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। आपस में मिल करके सहभागिता सुनिश्चित करके हम लोग इस काम को आगे बढ़ाएं, हम जरूर सफल होंगे। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।
Thank you, sir, for your kind words. I kindly invite Honorable Union Minister for Environment, Forest and Climate Change, Sri Bhupender Yadav ji, for his kind words. Distinguished guests, ladies and gentlemen. First of all, I congratulate to all of you that in this workshop, when I heard the representative of the groups, I am very much sure that there was a fruitful discussion and definitely a good policy outcome will come with today's workshop. So first, congratulate to all of you. Second thing, as we know that forest is our heart and wetlands our kidney. So when we think about the holistic approach of our body, so both are necessary. Approximately there is 24% area is the forest cover area of this country and 4.5% area is a wetland. 1/3 is in the forest and 2/3 out of the forest area. We are gathered here from all over the country. I don't want to give a formal speech. Rather than a speech, I want to interact with you. I think that is the better way to understand the subject. Some of them I know personally because when I visited the field, they are with me. From Loktak, Asni is here. I traveled with him in the remotest area of the Manipur. I think from Vyas, she worked with there for the dolphin. So we also attended one meeting. She worked very good, especially for the preservation of dolphins. Some other also faces I am very much familiar with them, but I want to know who is coming from Jammu and Kashmir. अच्छा, आप भी मिले थे DFO? अच्छा, बुलर में मिले थे. बांदीपुरा कौन मिले थे? आप थे बांदीपुरा वाले. कैसा चल रहा है बांदीपुरा में ड्रेजिंग का काम? लेकिन हुआ कैसा है बांदीपुरा में? कितना वो जो पेड़ वगैरह लग रहा था क्रिकेट का निकल गया? 4 पॉइंट वाटर बॉडी बन गया. हमारे देश की क्या एशिया की सबसे बड़ी अगर कोई मीठे पानी की झील है तो बांदीपुरा में हमारी वल्लूर लेक है. सारी टीम वहाँ पर मिली थी. हिमाचल से कौन आए? रेणुका सागर. पोंग. दोनों का ठीक चल रहा है? रेणुका सागर का, पोंग का? क्या प्रॉब्लम है? इश्यूज हैं, सेटलमेंट इश्यूज हैं. देन हरियाणा, सुल्तानपुर एंड भिंडावास, रोहतक. So what is the position? काम शुरू किया सर सुल्तानपुर का. क्या? वो झील के अंदर घास कटवा रहे हैं सर. वेटलैंड का जो अंदर पानी है ना, झील आई, उसमें घास वगैरह कटवा रहे हैं सर, ताकि थोड़ा झील में और वो प्रेशर नहीं है कैचमेंट एरिया कम करने का? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है. नहीं सर. अच्छा, खूब प्रेशर है गांव वालों का. नहीं सर, नहीं, आपका आशीर्वाद है सर. सही. चलिए, राजस्थान, फुलेरा. फुलेरा से? अच्छा.
after State Wetland Authority also. I'm Member Secretary State Wetland Authority. और कौन आया सांबर से? So Sambar actually it's no one's baby sir now presently. अच्छा। Government has started Sambar Lake Management Agency. अभी तो शुरू करी है। Yeah, this budget announcement it was declared and budget has been allotted by state governments. पर अभी सांबर में कुछ और हुआ नहीं है। कुछ नहीं हुआ sir. A lot of work has to be done sir. Yes. यूपी अतुल कांत शुक्ला डीएफओ इटावा सर। सरसई नावर वहाँ पे एक रामसर साइट है सर, तो उसमें काम हो रहा है सर। पानी थोड़ा कम था इस बार, तो पड़ोस के उससे हम लोग माइनर से लाए हैं उसको और भरा है पूरा, ठीक है इसमें। एनक्रोचमेंट इंक्रोचमेंट हमारे पास तो 4 हेक्टेयर है केवल फॉरेस्ट का, बाकी 95 हेक्टेयर उसमें ग्राम समाज की भूमि है और 60-62 हेक्टेयर करीब स्थानीय ग्रामीणों की है, तो वो थोड़ा दिक्कत रहती है, पर उसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पीछे सर सर पार्वती का बर्ड सेंचुरी क्या पोजीशन है सर? थोड़ा सा सर एंक्रोचमेंट इश्यूज गोंडा में। ये सर बाकी सर अयोध्या से बॉर्डर लगी हुई है, तो सर वैसे इको टूरिज्म के लिए सर वी हैव प्रिपेयर्ड द प्लान। बिहार नहीं, झारखंड nobody is from झारखंड, उड़ीसा यस सर नमस्कार सर, मैं सातकोशिया गॉर्ज सेंचुरी से डीएफओ हूँ सर। वहाँ सर हम लोग का जो गॉर्ज में सर अभी फिलहाल 40 इयर्स के बाद सर घड़ियाल का नेचुरल ब्रीडिंग हुआ है सर। वो एक जो हम लोग का जो लेक का मतलब सर हम लोग का जो गॉर्ज का जो प्रोडक्शन है उस लोगों का सपोर्ट है सर, वो एक अच्छा अचीवमेंट हुआ है सर। अदर सर नमस्कार सर, आई एम फ्रॉम भितरकनिका गहिरमथा लैंडस्केप सर। तो बढ़िया चल रहा है सर। देन वी हैड रिकॉर्ड नंबर ऑफ ऑलिव रिडले mass nesting happened this year sir. Then saltwater crocodile like highest density in the world, 1800 crocodile है sir. Then public का भी support है, state government का भी support है, and government of India is also sponsoring us sir. One of the best biosphere area. Yes. So we are like 3 protected area, and we are getting all the help from corporate sectors, then CSOs, NGOs, and it's for like next 10-15 years the future is bright sir. उसके बाद then we have to see the catchment areas like all the interstate river issue, Mahanadi, Brahmani, Baitarani. For next 15 years we are in safe hands. Next. I will come because I am coming to Angul next month. I will come. Propose. It is a proposed Ramsar site and also the largest artificial lake of Asia. Recently, the Hirakud Reservoir is flagged by Devinar Wildlife Sanctuary. It has very high population of wildlife, and recently we have vacated 400 families from the Hirakud Reservoir and sanctuary. In between, the settlements were there, and the settlement colony has been very well appreciated by the locals, and people are also happy. We have recovered around 390 hectares of reservoir and sanctuary area after this relocation. Yes. Thank you, sir. सर नमस्कार, आई एम अमलान नायक डीएफओ बरहमपुर। मैं एक्चुअली रामसर साइट जो डिक्लेयर होने वाला है टाम्परा वेटलैंड उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सर। तो लगभग वो 300 हेक्टेयर का है और वहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट का काम चल रहा है। उसके आसपास है सर ऋषिकुल्या नदी, जहाँ पर ऑलिव रिडले सी टर्टल का मास नेस्टिंग होता है, तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और इस बार 5.5 लाख ऑलिव रिडले सी टर्टल्स वहाँ पर नेस्टिंग किए हैं और सब सालों का रिकॉर्ड उसने तोड़ दिया है।
तो उसी के आसपास ही है तांपरा वेटलैंड, जिसको कि हम रामसर साइट के हिसाब से उसको डेजिग्नेट करने वाले हैं। तो उसका डेवलपमेंट चल रहा है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, सब जगह से सर अभी चल रहा है, जो डेवलपमेंट का काम चल रहा है सर। थैंक यू सर। West Bengal? She is there, I think. You are from West Bengal? From government side or NGO side? Or No, lobby? I am from NGO side. Okay. So I can put focus on Indian Sundarban because my organization, South Asian Forum for Environment, we basically work on Indian Sundarban. So I can say that due to certain reasons, the salinity regimes are got changed. The western part of the Sundarban is getting more fresh water, and the eastern side are not getting as much as fresh water. And there are some issues. Last week I visited Sundarban and I noticed that lots of dead carcasses of horseshoe crab. We all know that horseshoe crab, we get the blue blood from the horseshoe crab, and we can make very valuable vaccine from it. So we must look upon this conservation of this species. And also regarding East Kolkata wetlands, we are doing the pricing of ecosystem services. And for that, we are doing some intensive study. We noted that the water quality and also the encroachment is great problem there. So you are stationed at Kolkata? Yes, basically, but we also work on Work northeast there. states also. Sikkim, Thank you. Changu Lake, you are. And the other DFO is coming? Yes. Namaskar, sir. I'm Urmila Thapa. I'm Joint Director Environment. And we've been working for conservation of wetlands for a very long time now. And we have more than 500 wetlands. And we've recently prepared a report, brief document of 150 wetlands. And we have recently also notified 25 wetlands. And we work with the community, and so the Pokhri Sanrakshan Samiti, and we've been working with community participation. And thank you. Assam? आप दोनों ही थे? वो दीपोर बिल से। You are from there. सर मैं सत्येंद्र सिंह एडिशनल पीसीसीएफ हूँ, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी हूँ, और मैं डीएफओ एज आल्सो कम। तो लास्ट टाइम आप विजिट किए थे तब मैं नहीं था वहाँ पे। डीएफओ थी? डीएफओ थी। और वो पीसीसीएफ से? पीसीसीएफ ऑफ एंड पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ देयर सर। क्या दीपोर बिल का मैनेजमेंट प्लान शुरू हुआ? मैनेजमेंट प्लान है सर, आईआईटी गुवाहाटी से बात हुई, 3-4 बार डिस्कशन हो गया। उनको माइक दो। नमस्कार सर, मैं जयश्री नाइडिंग, गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डीएफओ और रिप्रेजेंटिंग दीपोर बिल। सर हमारा अभी प्रिलिमिनरी डिस्कशन आईआईटी के प्रोफेसर से हो चुकी है। उनको रिक्वेस्ट, ऑफिशियल रिक्वेस्ट भी दिया गया है फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड प्रिपरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान। एंड पीछे सर नमस्कार, और मेरा नाम पूर्णिमा देवी बर्मन है, और मैं सर असम से हूँ, और मैं एक बर्ड के लिए काम कर रही हूँ। ये हारगिला बर्ड, जैसे कि आप मेरे यहाँ पे देख रहे हैं, ये हारगिला बर्ड है, एक बहुत बड़ा पक्षी है। और इसको ना पहले लोग इसको मतलब बैड ओमेन जैसे अपशगुन मानते थे। तो मैं 15 साल से इसके लिए काम कर रही हूँ, और लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ, और हमारे यहाँ पे 10,000 महिलाएं हारगिला आर्मी, इस बर्ड को हारगिला बोलते हैं। हारगिला मतलब बोन स्वेलर्स, वो मतलब हड्डी खा देते हैं, ऐसे मतलब दे आर स्कैवेंजर बर्ड। और ये बर्ड मैं इस बर्ड के ऊपर पीएचडी भी कर चुकी हूँ। और ये बर्ड मतलब बहुत वेटलैंड डिपेंडेंट भी है और स्कैवेंजर भी है, तो हम वहाँ पे काम कर रहे हैं सर। थैंक यू। हाँ। Railway has taken some initiative in Dapurigul? Railway has taken some initiative in Dapurigul? Okay. It has been, they have been requested for funding. Again, they are telling that
funding has to come from the MOEF and CC. So then we have asked him to ask the Railway Ministry to talk to the MOEF and CC. Then you are not updated. Please. Yes, sir. After that, they have not done the works. Arunachal Pradesh. So good afternoon, sir. In our state, we have nearly 1,300 water bodies, which are more than 2.5 hectare in size, sir. And a good percentage are now located in the protected areas and forests, so they are legally protected. The ones which are outside the legally protected areas, we are in touch with the district administration, sir. You are DFO? Sir, I am Chief Conservator of Forest and Member Secretary, State Wetland. The other person? He is Director, sir. I am Director Environment, and I am also the convener of the Technical Evaluation Committee under the State Wetland Authority. Okay. So as of now, sir, we are in the process of notifying the. Right now, we have received a section number of document that we are in the process, sir. Meghalaya? Meghalaya? No. Only Mr. Lingdo is here. Okay. Mizoram? Yes. Good evening, sir. My name is Thalitija. I'm looking after Pulag Wetland in Mizoram, southern part of Mizoram. Yes, sir. Okay. Nagaland? Tripura? Maharashtra? Team is here. Good evening, sir. My name is Yashwant Keskar. I am DFO Nashik, and I am looking for Nandur Madhyameshwar Sanctuary. Sir, myself Anil Nimje. I am DFO Akola. I am looking after the Lunar Crater Sanctuary. It is a Ramsar site also. Good afternoon, sir. My name is Adarsh Reddy. I am Deputy Conservator of Forest, Mangrove Cell, Mumbai. I am looking after I'm representing the Thane Creek Flamingo Sanctuary, sir. It is situated in heart of Thane, spread over 68 square kilometers. It has also been designated as a Ramsar site. So we have, sir, every year a collection of about 1.5 lakh flamingos which come from Kutch as well as from Central Asia. So the greater flamingos come from there and the lesser flamingos from Gujarat. You are making a cycle track there? No, sir. That is the other side near Sanjay Gandhi, sir. Sanjay Gandhi. Here, sir, there's no development as such. A couple of vital projects like the bullet train and then a couple of highways which after taking due permission under Conservation Act and the Honorable High Court's permissions, we are going to initiate this. Okay. But we are having some development projects, sir. A couple of ecotourism activities and then interpretation centers. Already there is one interpretation center and supplementary to that, a couple of activities. Okay. So. That's good. Goa? A very good evening to you, sir. My name is Dr. Sayesh Morajkar. I'm from Goa State Wetland Authority. We have already notified 7 wetlands under the rules, and one of them, that is Nanda Lake, has been proposed as a Ramsar site. The remote Ramsar Site Information Center database has been filled and the form has been recently submitted for the same. Madhya Pradesh? नमस्कार सर, मेरा नाम लोकेंद्र ठक्कर है। मैं वहाँ प्रभारी अधिकारी हूँ, डायरेक्टर हूँ वेटलैंड स्टेट वैटलैंड अथॉरिटी का। मेरे सहयोगी हैं असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर डॉक्टर मनोज विश्वकर्मा हूँ सर। सर, हमारे यहाँ करीब 15,152 तालाब हैं जो कि 2.25 हेक्टेयर से बड़े हैं। मध्य प्रदेश में एक ही तालाब था रामसर साइट भोज वेटलैंड, बड़ा तालाब जो कहलाता है, राजा भोज ने बनाया था 1000 साल पहले। तो 2002 में वो रामसर साइट हुआ। उसके बाद अभी मिनिस्ट्री के भी एनकरेजमेंट और कांस्टेंट प्रयास के द्वारा हम लोगों ने 3 और तालाब भेजे हैं सर, और पूरी संभावना है कि हमारे 3 तालाब रामसर साइट में घोषित हो जाएंगे। कौन कौन से? सर, इंदौर के 2 तालाब हैं, एक सिरपुर, और आपकी अनुमति देंगे तो सर एक बर्ड्स की बहुत अच्छी किताब सिरपुर बर्ड्स की है, तो हम आपको भेंट करना चाहते हैं। और सर दूसरा यशवंत सागर है, वो भी करीब 200 साल पुराना तालाब है, वहाँ के इंदौर के राजा ने बनाया था। और एक सर सांख्य सागर तालाब है शिवपुरी का, जो कि वेटलैंड प्रोटेक्टेड एरिया में है। तीनों बहुत ही अच्छी स्थिति में है
और तो उन तीनों तालाब के सर प्रस्ताव गए हुए हैं और 6 तालाब सर हम नोटिफाई करने की प्रक्रिया में हैं जिनको भारत शासन ने NPC के अंतर्गत अनुदान दिया है। 2 तालाब अभी हमारे सर NPCA में भारत सरकार ने मंजूर किए हैं, एक गत वित्तीय वर्ष में और एक अभी सर विचाराधीन है। थैंक यू सर। छत्तीसगढ़ पे आए। पंजाब, सर मैं रमनकांत मिश्र हूँ। मैं चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन हूँ पंजाब का और स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का मेंबर सेक्रेटरी भी हूँ। सर हमारे यहाँ 1381 जो हैं 2.25 हेक्टेयर से अधिक एरिया के वेटलैंड हैं। हमने उसमें से 50% को मौके पे आइडेंटिफाई कर लिया है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ले लिया है, सो दैट वी कैन नोटिफाई दैट इनटू द वेटलैंड। बाकी 50% की हम अपने आप से कार्य कर रहे हैं सर। हमारे पास 6 रामसर साइट है सर। हमारे मुताबिक सिर्फ यूपी में शायद 6 रामसर साइट है। पोंग आप हिमाचल में? पोंग हिमाचल में है। आप तो नहीं गिनते? नहीं, हम नहीं गिनते सर। तो 6 हमारे पास है सर। सबसे ज़्यादा 6 हमारे पास है। कौन कौन से? हरिके है सर, हरिके, रोपर, नंगल, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, केशोपुर और तांजली, 6 हैं। और 2 हम प्रपोज कर रहे हैं सर, एक हुसैनी वाला और एक रंजीत सागर, जो हम प्रपोज कर रहे हैं। हमारे रामसर साइट मैनेजर्स आए हुए हैं सर, वो भी अपनी रामसर साइट्स के बारे में बताएंगे। हमारी पब्लिकेशंस है सर वेब बर्ड्स के रामसर साइट्स पे, और घड़ियाल हमने इंट्रोड्यूस किया था ब्यास में, तो हम लेके आए हैं सर आपको देखने के लिए। कहाँ से आए हैं वेटलैंड मैनेजर? कौन कौन सी साइट से? पंजाब वाले जोर से बोल लो। पठानकोट से। दूसरे सर नलिन यादव, DFO वाइल्ड लाइफ फिरोजपुर सर। मेरे पास हरिके वेटलैंड और ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है सर। ब्यास कंजर्वेशन जी सर। पीछे। गुड आफ्टरनून सर। मैं धर्मवीर और मेरे पास सर मैं DFO वाइल्ड लाइफ रोपड़ है सर, और मेरे पास से नंगल और रोपड़ वेटलैंड सर। थैंक यू सर। और नमस्कार सर। मैं WWF इंडिया से हूँ। मैं डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, बट सर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलता है कि पंजाब के सभी रामसर साइट्स पे काम करूँ, और ब्यास पे सर काफ़ी काम करते हैं। आपका काम शुरू हुआ मीटिंग का, डॉल्फिन का? जी सर, वो काफ़ी प्रोग्रेस में आपके पास आ जाएगा 10 दिन के अंदर रिपोर्ट हो जाएगा? जी सर। ठीक है, बैठ। कर्नाटक हो गया? यस। So I'm Dr. S. Subramania. I'm a retired professor who's been working with the Karnataka Forest Department, offering my birdwatching services to take forward all the birdwatching conservation initiatives in Karnataka free of cost. And I'm a compiler for Ramsar site. We have proposed our first Ramsar site, Rangamtittu Bird Sanctuary, and also 3 more on the pipeline. And we plan to designate another 10 Ramsar sites in the state in the years to come. So, thank you. Kerala? You have two Ramsar sites, 3? 3. Sir, I'm Dr. John C. Matthew, working as Environment Program Manager in the Department of Environment and Climate Change, looking after the State Wetland Authority technically, and the nodal officer of the biggest Ramsar wetland in the state, Bembanad Code. And Vanakkam sir, my name is P. Kalayarasan, Environmental Engineer, Directorate of Environment and Climate Change. See, there are 2 more wetlands. One is a freshwater lake, that is Sastamkota. Another one is Sastamudi in Kollam district. So for these 3 wetlands, already the management action plan approved by Ministry of Environment and Forest, and the implementation is under progress. Meantime, with the support of VISA and CWRDM, there is another R&D center in Kerala. The revision of the management action plan for these 3 Ramsar sites, as well as preparation of the management action plan for other wetlands also under progress. Very good. Telangana? Somebody is here from Telangana? Yes. हमारे यहाँ
जितने भी वेटलैंड्स हैं वो थोड़ा कैचमेंट एरिया के कब्जे होने के कारण प्रॉब्लम्स में हैं, लेकिन हमने अभी बीएचएस भी बनाया है एक वेटलैंड को। इंडिया में पहला बीएचएस है जो एक्वेटिक वेटलैंड का है। कौन सा? अमीनपुर लेक सर, बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट के अंडर। इस तरह से हम बचा रहे हैं तालाबों को। और एक हार्ट ऑफ द सिटी में लेक है सर, जो सीवेज वाटर का लेक है, और उसमें हमने फ्लोटिंग आइलैंड लगाया है, तो जिससे कि वो फ्लोटिंग आइलैंड से सीवेज वाटर क्लीन हो रहा है। तो अब उसकी लेक की स्थिति बहुत अच्छी है, सीवेज वाटर साफ़ पानी बन रहा है, उसकी हम लोग रेगुलर टेस्टिंग कर रहे हैं, और वहाँ पे बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज़ हो रही है। थैंक यू सर। तेलंगाना में आप? यस सर, मैं अशोक कुमार सिन्हा, एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट सर। एक्चुअली हम लोग नोटिफिकेशन के प्रोसेस में हैं सर, डेजिग्नेटेड ये वेटलैंड्स के लिए। वी हैव रिटन टू कलेक्टर सर, एंड देन वी विल गेटिंग द रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑन द एटलस ऑफ द वेटलैंड सर। एंड देन फॉरेस्ट में सर हम लोग का 3 सेंचुरी है सर, और तीनों बहुत अच्छा चल रहा है सर, मंजीरा, पाकाल एंड एटूर नगरम सर। बट देयर आर सम इश्यूज ऑफ इंक्रोचमेंट सर। और बाकी जो लेक्स जो आउटसाइड हैं सर, एज शी हैज टोल्ड, Aminpur we are attracting large number of these birds from the outside sir. Like by Manjira also there is one lake where these birds are coming from outside sir. प्रवासी पक्षी आ रहे हैं सर वहाँ पे। और जो लेक हम लोग की इस बार मीटिंग हुई थी, उसमें जितने भी इनलेट्स जो वाटर में आ रहे हैं, हैदराबाद में काफ़ी लेक्स है सर, इन एंड अराउंड हैदराबाद। तो उसमें हम लोग ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह लगा करके, क्योंकि ऑल द लेक्स आर बिकमिंग लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज देयर सर, उसमें हेवी मेटल्स इवन बहुत ज़्यादा है सर। तो उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके वी आर ट्राइंग टू क्लियर द वाटर, दैट इज वन थिंग सर। एंड देन वी आर लुकिंग ऑल्सो आफ्टर द इंक्रोचमेंट, वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक हैदराबाद म्यूनिसिपल अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड ऑल दिस अर्बन बॉडीज, they are all looking after the removal of encroachment, also other sewage treatment plants sir. So like that we are going sir. We don't have any Ramsar sites sir. Thank you sir. Manipur? I took over the Sazo Local Development Authority since January, but there was election and all process. I couldn't do anything. But from the mid-March, after I assumed the SAS, I had conducted about more than 25 meetings with all the dwellers, different community residing in and around the Loktak Lake and associated wetlands. And also I tried to change the mandate of the Loktak Development Authority with the perspective of the ecological and community should be at the forefront, and engineering other things should be follow up. And I also pursue the wise use policy for Loktak Lake. You're a good officer. Kindly clear it as much as possible. That will be great help for the Loktak, sir. Thank you. Andhra Pradesh? Yes. Good evening, sir. Myself, Selvam, DFO Wildlife Elluru, sir, managing Kolleru Wildlife Sanctuary, which is part of Kolleru Lake, sir, which is a Ramsar site. Sir, interestingly, sir, more than 50% of breeding population of spot-billed pelican, which is available in Kolleru Lake, sir. So, one good thing is their number is increasing, sir. So, that is a good trend, sir. We also have a problem of aquaculture, sir. That is a major issue in Kolleru. Like wetland, a lot of complex issues are there in Kolleru, sir, which is known to everyone. Recently, sir, BNH is coming up with the study, sir, to tag spot-billed pelican, sir. Also the satellite tagging, sir. So recently they have submitted proposal in MOF, sir. Hopefully it will come, sir, so that study will start, sir. I am also managing 2 more mangrove sanctuaries, sir. One is Koringa, another is Krishna, sir. Is Godavari and Krishna river basin, sir. So more than 450 square kilometer of mangrove is there, sir. Which harbors more than 150 numbers of fishing cats, sir. So largest population, we could say, in Southeast Asia. Also, 3-year project is there, sir, for studying ecology and behavioral study of fishing cats, sir, which is already approved by ministry. It is going on, sir. WA is conducting, funded by Vedanta Industries. Very interestingly, sir, Kakinada is known for mud floods, sir. We are getting
Good evening, sir. I am Selvam, DFO Kadalur, sir. The famous Pichavaram wetland mangrove is with us, sir. Pichavaram ecotourism and adequately conservation, sir, our prime duty, sir. Okay. Thank you, sir. Good evening, sir. I am Kalanidhi, Deputy Conservator of Forest, working in the Tamil Nadu State Wetland Authority, sir. I am assisting my member secretary, sir. Thank you. Sir, good evening, sir. I am Dr. Arioli, District Forest Officer and Site Manager of Point Kalimar. This is the only one Ramsar site in our Tamil Nadu, sir. Here, mangrove forest is there. Only 12,000 hectares of mangrove forest is there. 60% of state forest, sir, it is. There is no issue, encroachment issue in our Point Kalimar. We proposed 2 sites for Ramsar site. So you are one. Sir? You are one, now alone. 13 will come together in future. Good evening, sir. I am E. Prashant, Wildlife Warden, Chennai. I am the site manager of Pulicat, Vedandangal and Karikali Bird Sanctuaries. So we have proposed Vedandangal and Karikali for Ramsar site this year, sir. Okay. Next. Good evening, sir. Myself, Murugan, DFO Tirunelveli, sir. In our district, Kundankulam Bird Sanctuary is located, sir. The specialty is freshwater lake where flamingos are seen, sir. And we have proposed that for Ramsar site, sir. Okay. Thank you, sir. Good evening, sir. I'm Ilayaraja, DFO Kanyakumari. Sir, Kanyakumari is a predominantly agriculture district, sir. More than 2,000 wetlands are providing water for this agriculture needs, sir. Out of which, in 10 wetlands, we have a very good migratory birds population, sir. Okay. So we declared it as a conservation reserve under Wildlife Protection Act, sir. Out of which 2 wetlands we have proposed under Ramsar site, sir. So major problem for us, sir, population density is very high, sir. So encroachment for agriculture needs and house construction is high, sir. And because of sewage water release, eutrophication also creating more problems, sir. So with civil society participation, coming June 5 on World Environment Day, we are initiating a program to remove this water hyacinth with the help of local people. And this water hyacinth will be dried and processed and used for handicrafts and manure creation, sir. Okay. Thank you. Good evening, sir. Sir, मेरा नाम जगदीश बकान है, sir. I am working as a DFO in Wildlife Warden रामनाथ, sir, रामनाथपुरम district. सर मेरे जिले से सर 3 रामसाइट साइट के लिए नॉमिनेशन दिया है, सर. एक है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, सर. सेकंड इज चित्रांगुडी सैंक्चुरी, सर. एंड थर्ड इज कांजीराकुलम सैंक्चुरी, सर. इसके साथ साथ सर इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, सर, वी हैव गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, सर. It was a UNDP JEP project, sir. It was started in 2002, sir. I am working as a director, Gulf of Mannar Biosphere Reserve Trust also, sir. In that, sir, we are associated with 2,550 self-help groups, sir. Through Eco Development Committee, we are doing both conservation and development works. Thank you, Betty. Anybody from Dadra Nagar, Daman Diu, Lakshadweep, Andaman, Ladakh? Good afternoon, sir. I am Raza Ali Abdi, Wildlife Warden Kargil, representing Union Territory of Ladakh, sir. हमारे पास 2 रामसर साइट है, सर. एक छोकर है और एक सोमोरी है, सर. जो छोकर जो अभी 2020 में ही नोटिफाइड हुआ है, सर. अबाउट सर जो हमारा छोकर लेक है, सर, इम्पोर्टेंट एरिया है. ब्लैक नेक क्रेन का ब्रीडिंग का जो हमारा स्टेट बर्ड भी है, सर. जो मेजर इश्यूज हम फेस करते हैं, सर, वहाँ पे फेरल डॉग्स है और क्लाइमेट चेंज का है, सर. प्लस बाकी जो मेजर काम हमारे इको टूरिज्म से रिलेटेड वर्क्स और बाकी चीज़ें चल रही है, सर. थैंक यू, सर. Delhi? Nobody is coming from Delhi. Any state left now? Gujarat. Yes. Uttarakhand also. नहीं है. Yes. Good evening, sir. I'm Shakira Begum, DCF Ahmedabad. हमारे डिस्ट्रिक्ट DCF Ahmedabad, सर. और 2 रामसर साइट है, सर. एक फर्स्ट रामसर साइट है, नरसरोवर है, जो रिसेंटली रामसर साइट हुआ है, थोल सेंचुरी है, सर. थैंक यू, सर. और उधर जामनगर में? जामनगर में भी तो रामसर साइट बना ना अभी. खेजावड़िया. वो बना. नमस्कार सर, मैं रविराज सिंह राठौर, सर, वडोदरा वाइल्ड लाइफ डिवीज़न. मेरे पास सर वडवाना वेटलैंड है, सर, जो 2021 में रामसर साइट डिक्लेयर हुआ है, सर. नमस्कार सर, प्रतीक जोशी, ACF मरीन नेशनल पार्क जामनगर, लुकिंग आफ्टर द खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जामनगर के पास. जी सर. पीछे
DCF नडियाद. Sir, good evening, sir. Myself, Dr. T. Karpasamy, DCF Nadiad, sir. I am looking after Parage Wetland, sir. Parage Wetland is one of the most populated Saras crane wetland, sir. Around 650 Saras crane is there, sir. Another migratory bird, flamingo, pelican is there, sir. In Parage Wetland, there is no problem, sir, but land is planned to the water irrigation department, sir. That management थोड़ा सा प्रॉब्लम सर. अभी इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. थैंक यू सर. उत्तराखंड और कोई छूट गया? मैं कुछ बातें आप लोगों को बहुत संक्षेप में कहूँगा, लेकिन मेरा मानना है कि इम्पोर्टेंट विषय है. सबसे पहला, ये आज़ादी का अमृत उत्सव का साल है. हमारी झीलों को, हमारे पोखर, मार्श, हमारे वेटलैंड्स, ये आने वाले समय की हमारी धरोहर है. हम कितना ही सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट की बात कहेंगे, औद्योगिक डेवलपमेंट की बात कहेंगे, लेकिन हमारे आसपास की अगर वाटर बॉडीज़ को हम लोगों ने संभाल करके नहीं रखा तो फ्यूचर में हमारे को दिक्कत रहती है. वैसे भी मैंने जो अपने शुरुआत में कहा था कि वेटलैंड हमारे किडनी का काम करते हैं, तो वेटलैंड कोई भी अर्बनाइजेशन भी होगा, लोगों के घूमने के लिए, लोगों के स्ट्रेस रिलैक्सेशन के लिए, पक्षियों के आने के लिए, कार्बन क्रेडिट को बढ़ाने के लिए, एक अच्छे वातावरण को बनाने के लिए ये बड़ी भूमिका का काम करते हैं. लेकिन शहरों के साथ साथ गाँवों में हमारे पानी के जल स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारे आसपास की खेती को बढ़ाने के लिए, पीने के पानी के लिए, पशुओं के पानी के लिए बड़ा काम करते हैं. प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि देश के हर जिले में आज़ादी के अमृत महोत्सव में कम से कम 75 हमें वेटलैंड्स बनाने हैं. जो डीएफओ यहाँ पर हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के यहाँ पर लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर हैं. विशेष रूप से मैं वन विभाग के लोगों से कहूँगा, अपने अपने डीएफओ अपने अपने एरिया में ऐसे 75 वेटलैंड को आइडेंटिफाई करें, और जो भी सांसद कहीं भी हो, कैसे भी हो, 75 वेटलैंड बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उसको पूरी तरीके से सहयोग करें. दूसरा, जो हम वेटलैंड मित्र कह रहे हैं, वेटलैंड चैंपियंस कह रहे हैं, वेटलैंड नॉलेज पार्टनर कह रहे हैं, वेटलैंड में काम करने वाले एनजीओ और कॉरपोरेट सेक्टर को काम कर रहे हैं, जो हमारे 75 वेटलैंड जिनको हम मानते हैं कि रामसर साइट बनने चाहिए, वहाँ के डीएफओ उसका अपनी अपनी लिस्ट तैयार कर लें. और अभी जो हमने नेशनल वर्कशॉप करी है, अब ये वर्कशॉप हम रीजनल लेवल या स्टेट लेवल पे भी करें. मैं लगभग पिछले मंत्री बनने के 3-4 महीने बाद से ही अपने प्रोग्राम को ऐसा बना के रखता हूँ कि एक ना एक वेटलैंड पे और एक ना एक फॉरेस्ट एरिया में मैं ज़रूर जाता हूँ. इस कारण ग्राउंड पे जो चलता है, ग्राउंड पे जो हमारे को बूस्टिंग चाहिए, पॉलिसी इंटरवेंशन चाहिए, वो ध्यान में भी है. और आप लोगों से बात करने के बाद भी ध्यान में इसलिए आता है कि लगातार मैं एक आप लोगों के साथ टच पे, ग्राउंड पे रहता हूँ. मेरा ये मानना है कि हमारे देश में, हमारे डिपार्टमेंट में, प्रशासन में इसको लेकर बहुत अच्छी सजगता है. लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जब आप वेटलैंड मित्र बनाएंगे तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होगा, जब आप नॉलेज पार्टनर बनाएंगे तो आपके साथ वैल्यू एडिशन होगा,
जब आप NGOs को जोड़ेंगे तो वो एक मूवमेंट बनेगा। जब आप वेटलैंड चैंपियंस बनाएंगे, जैसे हमारे यहाँ अभी जिन लोगों का सम्मान किया है, तो लोगों में एक पॉजिटिव कंपटीशन की स्पिरिट आएगी। और इन सब को करते हुए जब आप कॉरपोरेट सेक्टर को भी जोड़ेंगे तो अपना एक रिसोर्स मैनेजमेंट भी खड़ा होगा। हम जिस समाज की कल्पना करते हैं वो सेल्फ सस्टेन समाज है, और सेल्फ सस्टेन समाज, ये जो धरोहर है ये हमारी अपनी धरोहर है। हमको एक पूरा उसको प्रिजर्वेशन करने का, उसको अपना अपनत्व का विषय, मतलब ये मेरा धरोहर का विषय है और ये मेरे क्षेत्र को दिया हुआ प्रकृति का बड़ा उपहार है, इसलिए इन सब विषयों को हमको खड़ा करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जो 75 साइट हम लोग अपनी वेटलैंड को रामसर में करने जा रहे हैं, उसमें तो एटलीस्ट इस 15 अगस्त को एक तिरंगे का स्थान लगना चाहिए, झंडा लगना चाहिए। तो ये हमारी राष्ट्रीय भावना से जोड़ने का भी एक कार्यक्रम हो सकता है, ताकि हमें लगे कि इस वेटलैंड पे तो इकट्ठा होना ही है, तो लोग आकर के उसको बचाने के लिए, उस वेटलैंड के लिए पूरी तरीके से लगेंगे। कुछ जगहों पे प्रिजर्वेशन के जो बाकी के कार्य हैं उसको हमको पूरी तरीके से आगे करना चाहिए। और वेटलैंड और ये जो हमारे अमृत सरोवर है, ये हमारे सिविलाइजेशन की पहचान है। अभी जैसे जो 1 लाख 2 लाख वेटलैंड्स की बात करते हैं, तो इसमें कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। मैनेज करने के लिए हमारी समाज की बहुत बड़ी ताकत है। हमारी सोसाइटी के इनर कोर वैल्यूज़ ही इतने मजबूत हैं, तभी तो ये 1.5 लाख हैं। अगर हमारे कोर वैल्यूज़ नहीं होते, जिसको हम नेटिव विजडम कहते हैं, उसको महत्व देना चाहिए। हमारे डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो हमारे देश की अपनी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें से भी निकलता है। हम हमेशा बाहर से ज्ञान लाएंगे तभी हम अपना विकास करेंगे, ऐसा नहीं है। और ट्रेडिशनल नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए मिथक को तोड़ना होता है। अब हमारे केरल में जिनको हमने सम्मान दिया, वो कोई बड़े इंस्टीट्यूट से थोड़ी लेकर के आए, लेकिन 40-50 साल से लगे हुए। हमारे जो 2 बहनें आई हैं, अब उन्होंने जल सहेली बनाया है, और जल सहेली बना करके उन्होंने ना केवल वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, बल्कि एक मिथक को तोड़ा है कि भाई इस तालाब का पानी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? तो जब वुमेन पार्टिसिपेशन और ये एम्पावरमेंट होता है, हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज होती है, तो हमको पता है कि उसके कैचमेंट के रास्ते कहाँ पर हैं, उनको भी हमें आगे इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये वेटलैंड के पास हमारे कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज हैं, उनका भी प्रिजर्वेशन और उनका भी सम्मान होना चाहिए। सहभागिता का अर्थ क्या है? सहभागिता का अर्थ हमारे चौबे जी ने बहुत अच्छा मंत्र कहा था, सेना भवतु सैनो भुनक्तु सहवीर्यम करवा वही तेजस्विना वदी तमस्तु मा विद्विषा। हम साथ साथ रहें, हम साथ साथ चलें, हम साथ साथ मिल कर के एक अच्छे उद्देश्य के लिए। इसलिए वो कह रहे थे संगच्छध्वम संबद्धम, मतलब हम साथ आए, साथ चले, साथ रहें, एक सोच के साथ आगे बढ़े। इसीलिए सहभागिता है। इसीलिए उन्होंने अपने विषय में हमको ये कहा, सहभागिता का अर्थ कि एक कलेक्टिव भाव आना चाहिए। और इतनी बड़ी वेटलैंड्स है, हमारा लोकटक तो कितना 230 किलोमीटर का है, 236 किलो। वुलर का हमारा कितना एरिया होगा? उनका भी 200 कितना है, 130। और व्यास का भी एरिया तो इतना 100, 185। चिल्का कितना बड़ा होगा? 1000। और ये जो गल्फ ऑफ मन्नार है, आई थिंक 2300 किलोमीटर। कितना होगा 1000 किलोमीटर में? 560 स्क्वायर किलोमीटर। 560 स्क्वायर किलोमीटर, तो स्क्वायर किलोमीटर तो एरिया और बड़ा होगा। सो इतना बड़े वेटलैंड्स किसी भी देश के पास नहीं है, इतना बड़ा रिजर्वायर किसी भी देश के पास नहीं है। और हम एक बहुत बड़े नेचर के साथ जुड़े हुए विषय को हम लोग पूरा कर रहे हैं।
और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूँ, हमारे सेक्रेटरी साहब, हमारी जॉइंट सेक्रेटरी मंजू पांडे जी जिस विश्वास के साथ लगे हुए, मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आज़ादी के 75 साल में हम अपने 75 वेटलैंड को निश्चित रूप से रामसर साइट का दर्जा दिलवाएंगे और अपने देश के विषय को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये हमको एक सेम जिसको कहते हैं सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे आके करना होगा। आपसे बात करने का मेरा उद्देश्य यही है। हम कितनी भी पॉलिसी बना लेंगे, ज़मीन पे आपको करना है, लगना आपको है। सर्विस के लिए नहीं लगना है, मोटिवेशन के लिए लगना है, अर्निंग के लिए नहीं कर लगना है, अपने पुण्य को जोड़ने के लिए लगना है, क्योंकि आपको ऐसा अवसर मिला है। यहाँ एनजीओ के लोग भी हैं, भागीदारी का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि हम जो हमने चीज़ें कही हैं, जो पॉलिसी बनाई है, इसकी एक एसओपी बनाई जाए और हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा 15 दिन के अंदर वो आप लोगों को पहुंचाई जाएगी, ताकि वर्कशॉप के बाद रीजनल लेवल पे हम जो 75 वेटलैंड हैं उनको बेस बनाते हुए इस रीजनल लेवल के वर्कशॉप को आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री जी के जो 75 अमृत सरोवर हर जिले का लक्ष्य, उसमें सहयोग करेंगे और अपनी 75 वेटलैंड को हम रामसर साइट का जो दर्जा दिलाएंगे, उनको एक तरीके से नेशनल इम्पोर्टेंस का विषय करके इस देश के जल संरक्षण में भूमिका निभाएंगे। और जब हमने 13 रिवर का भी फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन की डीपीआर बनाई तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को बुलाया है। और इसलिए आप लोग भी ये काम करते समय, ये केवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, जैसा हमारी सेक्रेटरी कह रही थी कि हम पॉलिसी और नोडल एजेंसी हैं, लेकिन होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ, होल ऑफ द नेशन अप्रोच के साथ, राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारें, स्वशासन की सरकारें, इन सब को लेते हुए, हमारे जल शक्ति मंत्रालय को लेते हुए, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ये एक बड़ा काम हम आज़ादी के 75 साल में करके, जिसको हम अमृत काल कहते हैं, आने वाले 25 साल में एक भूमिका के साथ जुड़ेंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों से बात करने के बाद, ऊपर वाले किसी प्रदेश से आए हैं या ऊपर वाले गेस्ट ऑफ द ऑनर हैं? उसमें से कोई खड़ा नहीं हुआ। नीचे वाले और ऊपर वाले जो सब लोग हैं, एक साथ, एक तरीके से, एक मन के साथ हम लोग आने वाले समय में आज़ादी के अमृत काल में देश के वेटलैंड के प्रिजर्वेशन के लिए, देश के वेटलैंड के संरक्षण के लिए मिल कर के काम करेंगे। तब जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने लक्ष्य दिया है और जो देश के लिए आवश्यक है, उसको पूरा करेंगे। इतना विश्वास मैं आप लोगों से बातचीत के आधार पर कह रहा हूँ कि हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your inspiring words. With this, we bring the program to an end. Thank you, everyone, for your support and patience. I request everyone to kindly join for the high tea arranged outside the hall and at the Chlorophyll Cafe. Thank you so much. I request all the champions to please come on to the stage.
you.